LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ NPS जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक दीपशिखा सिकरवार जी। दीपशिखा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार विभूति जी, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है मेरी सहयोगी गौरा धवनलाल। Thank you, Vibhuti, and Deepshika, welcome to the program. A quick look at the headlines. Key domestic indices end lower for the second straight session. Sensex settles 536 points lower. Nifty ends below 21,550. Government distributes over 1,64 lakh Ayushman cards across the country during the Viksit Bharat Sankalp Yatra. And gold prices decline in futures market. Precious metal for February contracts tumbles 471 rupees. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स 536 अंक लुढ़का और निफ्टी 21,550 से नीचे बंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार ने पूरे देश में 1,64,00,000 आयुष्मान कार्ड वितरित किए और वायदा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट। फरवरी अनुबंध वाला सोना 471 रुपये टूटा। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि बाजार प्रतिभागी किसी बड़े डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं निवेशक फेड रिजर्व की बैठक के ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं। सेंसेक्स 536 अंक या 0.75% गिरकर 71,357 पर और निफ्टी 148 अंक या 0.70% गिरकर 21,517 पर बंद हुआ। BSE के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.20% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.30% की बढ़ोतरी हुई है। और अब एशियाई और यूरोप के बाजार का हाल भी जान लेते हैं। चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.20% की बढ़त को छोड़ दें तो प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.40% गिरा है। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% लुढ़का है और हांगकांग का हैंगसेंग 0.85% फिसल गया। यूरोपीय शेयर बाजार भी दिन के कारोबार में नकारात्मक क्षेत्र में थे। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 1% नीचे था, जर्मनी का डैक्स 0.60% कम था और लंदन का फुटसी 0.5% नीचे था। और विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया
₹83.29 पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 102.39 पर कारोबार कर रहा था। Now a detailed look at the Indian stock market. Key domestic stock indices ended lower in the second straight session today as market participants waited for the next trigger to get the momentum going. Additionally, investors were keenly awaiting the release of the Fed minutes. The Sensex settled 536 points or 0.75% lower at 71,357, while the Nifty settled 148 points or 0.7% down at 21,517. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.2% and the small-cap index jumped 0.3%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 companies declined, while those of 10 companies appreciated. JSW Steel declined 3.75%, Tata Steel lost 3%, and Infosys fell 2.9%. On the other hand, IndusInd Bank rose 1.7%, ITC jumped 1.5%, and Bharti Airtel added 1.15%. In sectoral indices at the BSE, 6 sectors declined while 14 logged gains. The metal sector declined 2.4%, IT sector slipped 2.3%, and the tech sector lost 1.8%. On the other side, the utility sector rose 1.8%, realty sector climbed 1.4%, and the power sector soared 1.3%. The overall market breadth was positive as shares of 2,194 companies appreciated, while those of 1,643 declined. A total of 108 companies remained unchanged. So, Deepshikha, though there has been a fall in the benchmark indices and the overall breadth of the market has been positive. We saw many sectors and many companies also gaining. So by and large, as the new year has dawned, it's been a fairly stable with minor corrections in individual stocks, and a lot of talk is going on about how 2024 is being seen. So your comments first on the stability. Is it at an overvalued price, or is the market overvalued, or is this here to stay for some time and the valuations are rich but correct? Gaurang, we've been seeing this kind of up and down movement in the market for some time. If you remember in December, towards the end of December, we did see, markets were touching high and there were a lot of corrections which were coming in. Obviously, this was largely profit booking. But what is happening now is there is a bit of nervousness about what is happening globally, to global economy and then global markets. How will the interest rates pan out in the developed world? The weakness in the global markets, global economies, especially European Eurozone, where, growth is still like stumbling. It's not like really recovered. So there is a bit of uncertainty on what kind of an overhang could it have. Uncertainty around the Red Sea, what's happening there, that has added to it. So I think overall, that's what is sort of weighing in on the sentiments here. In terms of the India story, I think people are still sort of assessing how it will play out with, in conjunction with what happens in the global economy and global markets. So I think all this has had kind of a mixed impact on the Indian markets. So people are still firming up their minds. But if you look at the economy, look at the numbers, there is a sense of moderation. We saw PMI numbers come out. There is a moderation on the expected lines, and how it will pan out going forward. We've seen that everybody's, raising their estimates. Rural economy is also expected to, improve with, Right. Additional demand coming in. So Indian economy story looks intact going forward. But this impact of what happens in the global market and how it will impact the domestic markets, that will be, it's yet to be sort of seen, Right. So just, some advice from you for our retail investors, because when the market is up,
everybody advises profit book, but we've been seeing that by and large, even just after profit booking, the shares continue to go up. And so the temptations to not book profit and push it a little further, what would you advise that if you're making a decent profit, get out partially, completely, wait for the dips to happen? What would you say? See, for retail investors who are small investors, for them it always makes sense to book profits when it is the right time. When you're making decent returns, book profit, enter the market again, So these cycles one needs to keep in mind when you're building a portfolio. I mean, the idea is to have your small, medium and long-term investments intact. And if it is a small term, you're looking at short term, you need to book those profits. You need to look at those opportunities. Right. So Deepshika, we'll go in for a short break. When we come back, we'll want to understand from you, like we read in the story, that investors are waiting, even the bulls are waiting for some fresh triggers. What could these triggers be, and how should retail investors wait for them or look out for them? But right now, short break. Stay with us. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back, listeners. You're tuned to Market Mantra. Deepshika, what are some triggers that, the markets, they say that the bullish run is a little tired, but they want to continue the bull run, but they're looking for triggers. What could they be? See, I think the market is waiting for clarity on what happens in terms of corporate performance. So if you look at some of the guidance which are coming out, so it's giving a very mixed kind of a scenario. So that clarity is probably one aspect. And of course, the big event this year in few months would be the general elections. I think that would be a very big kind of a factor for markets and, the kind of run that they are waiting for. What happens in government, markets and investors are always looking for stability in terms of policy, in terms of government. So I think that is one big trigger. And of course, the interest rates definitely remain, one of the biggest sort of motivators. What happens here and what happens, in US and other economies going forward. Right. वर्ष के शुरू का समय है। श्रोताओं को इच्छा ये भी है कि पूरे साल क्या होगा नहीं होगा हम जानें। गौरा जी के 3 सवालों में आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं। 2023 की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 19% की बढ़त रही है और जो जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि 85,000 तक का आंकड़ा इस बार छू सकता है। हालांकि पिछले साल चुनाव की बात नहीं थी, आपने चर्चा की कि चुनाव भी इस साल। आप किस तरह देखती हैं? देखिए, जो बाजार हमारा जो फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं, एक तो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक है। जो मॉडरेशन दिख रहा है कुछ क्षेत्रों में, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो आने वाले महीनों में वो भी ठीक हो जाएगा। इकॉनमी जो है रहेगी, उतनी ही स्ट्रांग रहेगी, तो उसका असर जो है कॉर्पोरेट रिटर्न्स पर आएगा। इन्वेस्टमेंट जो है, अब निजी क्षेत्र में निवेश की बात की जा रही है कि निजी क्षेत्र में निवेश भी होने वाला है, तो अर्थव्यवस्था जो है स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मीडियम टर्म देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। दूसरा, अमूमन ऐसा होता है और कृषि में अभी देख रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि जो रूरल डिमांड है, ग्रामीण क्षेत्र की जो डिमांड है, जो थोड़ी सी कमज़ोर थी क्योंकि इन्फ्लेशन था, तो उसका असर भी हटने वाला है और रूरल क्षेत्र से भी जो है वो डिमांड जो है वो और स्ट्रांग होगी, तो उसका असर भी कॉर्पोरेट्स पे पड़ेगा। जो डिमांड है ओवरऑल वो इम्प्रूव होगी। तो इकॉनमी जब स्ट्रेंथ में रहती है और अगर ग्लोबल जो विश्व में बाजार है और अर्थव्यवस्था है, अगर वहाँ पे सुधार होता है, अगर ब्याज दरें वहाँ घटेंगी, तो
जाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदा हमारे यहाँ ज़रूर होगा बाज़ार को। तो जो हमने देखा, जिस तरह के स्तर की आप बात कर रहे हैं, तो वो स्तर भी बिल्कुल आसानी से हो सकता है कि हम जल्द पहुँचें। Right. There are news reports and they're saying that arbitrage funds, and it has been seen, have made a strong comeback in 2023, stealing a march over debt funds. And I think they have posted a best performance ever in 8 years. Just wanting to understand, because, debt funds, a lot of us speak about. Equity, we all know. So what really are arbitrage funds, and how do they differ from debt funds, and how does 2024 look for debt funds? So typically arbitrage funds, Gaurav, they are, when there is high volatility in markets, arbitrage funds typically do well, because what they're doing is they're buying and they're investing in futures. So they're basically trading on the arbitrage. So whenever there is high volatility, arbitrage funds tend to do better. And we've seen that, markets last year was hugely volatile at some levels, So I think that kind of an advantage, they have had that kind of an advantage. And of course, they do have the tax, they have a better tax the regime than the debt funds. Okay, so it's that more favorable. It's more favorable. Okay. So I think they obviously, they have offered better returns in that sense. They've done well. Going forward, in terms of the interest rates, the indications are that probably inflation's coming down, so interest rates would also come down. So it may be that, debt funds may not do that well, or in terms of how they've done this year. So that needs to be seen. But I think theme for the next 2 years, it seems like equity is going to rule. Right. So before Vibhuti ji takes on the next lead story, a quick look at the US markets. The S&P 500 and Nasdaq Composite ended lower yesterday due to a decline in Apple stock following a broker's downgrade. Additionally, rising treasury yields led to declines in other prominent tech stocks. The S&P 500 tumbled about 0.6%, while the Nasdaq Composite lost 1.64%. On the other hand, the Dow Jones Industrial Average added 0.07%. सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में 64 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। आयुष्मान कार्ड प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि 9 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए और 6,79,000 रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस महीने की 25 तारीख तक 2,60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है। Right. So here when we look at these schemes, and in fact a lot of development projects are also being inaugurated, I think somewhere the aim is to ensure that, money reaches the hands of the last mile, so that people have money, whether it's money to save, money to invest. And I think all in the longer cause of getting greater equity, because we really don't have too much of that luxury of time to bring in equity. Definitely, Gaurav. The whole idea behind the Viksit Bharat Sankalp Yatra was to ensure that the last mile delivery, as the target was, has happened. And if it has not happened, ensure that the saturation is reached. Saturation target is 100%. So all the schemes which have been run by the government, they have been delivered at the last mile. So the entire idea is whatever government schemes are, whether it is Ayushman Bharat, whether it is Ujjwala, or other schemes which are run in rural India or otherwise, ensure that they reach the last mile. The saturation in all these schemes, all these programs is 100%. That is the target. So I think the whole idea is to ensure that if a development program is run by the government, it actually benefits those
who deserve it and those who are in need of these programs. So this Yatra was launched with that idea, to ensure 100% saturation. And I think wherever it is going, the mapping and the data backed approach is helping in reach, expanding the reach to deliver that. Right. We're going in for another short break from our sponsors. We'll be back. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. We move on with our next story. The Supreme Court has refused to order a special investigation team (SIT) probe into the Adani Hindenburg controversy, rejecting the plea to transfer the probe from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to an SIT. A bench comprising Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justices J.B. Pardiwala and Manoj Mishra said the market regulator has not been lackadaisical in the investigation. In a major relief to the Adani Group, Supreme Court said it can't enter into the domain of the regulatory regime, and a report of the Hindenburg report or anything like that cannot become the basis of ordering a separate probe, saying that SEBI will continue its probe as per law. The Apex Court directed the market regulator to complete its probe into the remaining matters within 3 months. The Supreme Court has also ordered the government and SEBI to check whether Hindenburg has ignored rules in shorting the market and to take action accordingly. A look at the oil prices. Oil prices declined today following sharp moves earlier in the week. Investors remain wary of the US economy due to the supply interruptions caused by ongoing tension in the Red Sea region. In intraday trade, Brent crude was trading at 0.05% lower at $75.85 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading 0.2% lower at $70.23 per barrel when reports last came in. So oil prices reacting to world situation? Absolutely. I think this whole uncertainty which has been fueled by what's happening around Red Sea and that shipping lines have to take another route and not take this route. So I think that is having an impact on the international prices per se. So hopefully once situation sort of settles there, they would reflect, the prices would also sort of settle down. Okay. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 22 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब तक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस गठबंधन का शुभारंभ किया था। श्री पुरी ने कहा कि समूह में शामिल होने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है और श्री पुरी ने कहा कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत के नेतृत्व में शुरू की गई पहल है जो जैव ईंधन अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और इसके लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उद्योग जगत में तालमेल बढ़ाएगी जिससे रोजगार के अवसर बनेंगे और आर्थिक वृद्धि तेज होगी। Right, and now Vibhuti ji, the gold silver prices. जी और जहां तक सोना और चांदी का सवाल है तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज फरवरी अनुबंध के लिए सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सोना 471 रुपये की गिरावट के साथ 62,786 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी मार्च अनुबंध के लिए 1,053 रुपये की गिरावट के साथ 73,042 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। अगर पिछले साल की बात करें तो सोना 55,000 के आसपास थी इसी जनवरी के आसपास, 1 जनवरी को। आज 3 जनवरी है, तो जहां तक सोना में जो वृद्धि है वो वृद्धि चांदी में नहीं है एक साल के अंदर, लेकिन फिर भी 7-7.5 हजार का उसमें आप अंतर देख रही हैं। बिल्कुल। सोना जो है हमने देखा कि पिछले पूरे वर्ष जो है जिस तरह
की अनसर्टनिटी दिखाई दे रही थी। मिडल ईस्ट में भी एक नया जो है अनसर्टनिटी आ गया। यूएस में भी अर्थव्यवस्था जो है उसमें बहुत उतार चढ़ाव था, फेड को लेकर के बहुत अनसर्टनिटी थी। तो हमने देखा कि सोना जो है उसमें खास तौर से ट्रैक्शन रहा है, और वो ट्रैक्शन भी कम होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये नई नई छोटी इधर अनसर्टनिटीज जो आ रही हैं, जैसे रेड सी में आया, उसका अभी तेल पर असर दिख रहा है। उसी तरह कमोडिटीज पर जो है असर जो है वो दिख रहा है। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था जो है बाहर यूरोप भी देखें या यूएस भी देखें, तो वो पूरी तरह से एक कहना चाहिए अच्छी स्थिति में नहीं है। तो वो असर जब तक रहेगा, ओवरहैंग रहेगा, कमोडिटीज जो है जैसे सोना है खास तौर पे, उसका असर दिखाई देगा। जी, एक और अच्छी बात है, अब आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शन इतना आसान हो गया है कि बड़े आराम से हम कहीं भी, हर किसी को विश्वास होता है और आराम से कहीं आप पे कर देते हैं। दिसंबर का महीना कमाल का रहा है और ये एक रिकॉर्ड बना है, और 1202 करोड़ के लेन देन के जरिए 18.23 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, यानी 54% ये ग्रोथ बढ़ा है। बिल्कुल, यूपीआई तो आप अगर देखें कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और अगर आप अपना पर्स भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल में यूपीआई है और आप हर जगह उसका एक्सेप्टेंस जो है वो इतना बढ़ गया है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल इंटरफेस जो है वो हर लेवल पे बढ़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जो फिनटेक कंपनीज भी हैं, मार्केट में भी उनका इंटरफेस इतना बढ़ गया है कि पिछले वर्ष में उन्होंने भी बहुत अच्छा कारोबार किया है नए इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन लाने में और उस तरह से। सो ये डिजिटल इंटरफेस जो है बहुत उसका पेनिट्रेशन जिस तरह से स्मार्टफोन्स का बढ़ा है उसी तरह से और बढ़ेगा। Absolutely, and digital a beautiful way actually to bring about scale, which we really need, right? Vice President Jagdeep Dhankar will inaugurate the Startup Expo in Kathua tomorrow. 25 startups from northern states will showcase their products in the expo. 6 women entrepreneurs will also participate in this expo. The theme of the expo is Emerging Startup Trends in North India. Deepshika, this whole thing about the startups in small places, so quickly your comments on the ecosystem which is actually flourishing. Absolutely. We know government launched a program called Startup India a few years back. There is a concession which is provided in the tax regime for startups. So the right ecosystem is being created. There's also, on debt support which has been provided through various schemes like Mudra and other schemes which are there for small entrepreneurs who require collateral-free loans. So all that is definitely fostering in the startup culture, and definitely there's this huge push from the government side, policy interventions which encourage innovation and the startup businesses. Absolutely. Deepshika, thank you so much for coming on to our program. And now listeners, thank you so much. And now listeners, before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices end lower for second straight session. Sensex settles 536 points lower. Nifty ends below 21,550. Government distributes over 1.64 lakh Ayushman cards across the country during the Viksit Bharat Sankalp Yatra. And gold prices decline in futures market. Precious metal for February contracts tumbles for 71 rupees. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. नमस्कार। एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
जॉब तो है लेकिन पेंशन नहीं है। मेरा रिटायरमेंट नजदीक है पर मेरे पास पेंशन नहीं है। आप लोगों की परेशानी का समाधान है LIC's न्यू पेंशन प्लस, जो देता है मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स के साथ गारंटीड एडिशंस और साथ ही पार्शियल विड्रॉल भी। इस पॉलिसी के निवेशित पोर्टफोलियो में निवेशित राशि का जोखिम पॉलिसी धारक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री